Assalamu alaikum students. Today is Monday, April 12, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. Students, in the previous week, we have almost covered unit number 1 and now we are into the exercise of unit 1. So in the exercise, we have activity 1 that we discussed in the previous class, but let's discuss it again. So here we are given with some questions and the dialogues of some of the students that are telling us about their pulse rate and discussing the factors that affect the pulse rate. So the first student is Atif. Atif says, if I run for 2 minutes, it will increase my pulse rate. तो आतिफ ये कहता है कि अगर मैं 2 मिनट्स के लिए रन करता हूँ तो मेरी पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी. अलीना says, if I run for 3 minutes, it will increase more and take longer to get back to normal. तो जबकि अलीना ये कहती हैं कि अगर मैं 3 मिनट्स के लिए रन करूँगी तो आतिफ से ज़्यादा मेरी क्या होगी, पल्स रेट इंक्रीज़ होगी. और इसी तरह वापस जब पल्स रेट वापस जब वो स्टॉप कर देगी एक्सरसाइज या रनिंग तो क्या होगा, इतना ही टाइम वापस लगेगा उसे रिकवर होने में, बैक टू नॉर्मल पोजीशन, पल्स रेट के नॉर्मल होने तक. ठीक है. देन थर्ड पे हमजा कहता है कि इफ़ आई एक्सरसाइज हार्डर माई पल्स रेट विल इंक्रीज मोर. तो हमने क्या पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे तो मोर विल बी द हायर विल बी द पल्स रेट. सो अहमद क्या कहता है, माई पल्स रेट विल नॉट जस्ट कीप गोइंग अप एंड अप. सो अहमद ये कहता है कि अगर हम रनिंग या एक्सरसाइज स्टॉप कर दें तो मेरा पल्स रेट ऊपर नहीं जाएगा. रोजी ये कहती हैं कि सम एक्सरसाइज विल इंक्रीज माई पल्स रेट मोर देन अदर्स. तो देर आर सम एक्सरसाइज दैट इंक्रीज पल्स रेट greater than some other exercises. Okay, so we have some questions, so let's answer based upon these arguments made by these of these students. So question number 1 is, how are you doing to test your prediction between Atif and Alina? Who do you think will have the higher pulse rate? तो हम ऊपर देखते हैं आतिफ और अलीना. आतिफ runs for 2 minutes and Alina runs for 3 minutes. So what do you think, who will have the higher pulse rate? Yes, Alina will have the higher pulse rate because she runs for 3 minutes. That is 1 minute more than the Atif. Okay, so Alina's pulse rate will be higher. Why Ahmad's pulse rate will not keep going if he stops running? So हमने ये देखा है कि pulse rate कब increase होता है, when we do some exercises. So running is a part of exercise. So when Ahmed is going to stop the exercise, its pulse rate will start decreasing and will return to its normal rate. Okay, that is 72 times per minute. Okay, so therefore as Ahmed has stopped running, therefore his pulse rate will decrease, not increase. Question number 3 है, do you agree with Hamza that if you exercise harder your pulse rate will increase, and why? Yes, we agree, because exercises affect the pulse rate. The more you will exercise, the higher will be the pulse rate. So therefore we agree with Hamza that if we exercise harder, our pulse rate will increase at a greater pace. Number 4, name some exercises that will increase pulse rate. So during lecture we studied some of the exercises that will increase the pulse rate, that are running, emotional episodes, stresses. So these kind of exercises that will increase our pulse rate will be mentioned here. Okay, moving on to the activity number 2, list as many harmful substances, drug that you can think of. So यहाँ पे ये harmful नहीं है, it's harmful. There is a typing mistake here. So harmful substances, जो drugs, there are some drugs that are helpful and are used in medications. Okay, so all drugs are not harmful. Okay, so there are some drugs that are harmful, so we have to write them. For example, the given is alcohol, so we may write as cigarette, tobacco, cocaine, gluesmithing and bath salt. Okay, another is shoe polish, and the other one is
टर्पेंटीन ऑयल यूज्ड इन पेंटिंग। सो वो जो पेंट का एक बड़ी नाइस उसकी फ्रेगरेंस, एक स्मेल आ रही होती है और वो हमें बड़ा अम्यूज़ कर रही होती है, बड़ा हम उसको स्मेल करके इंजॉय कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज it contains some ingredients that that cause that acts as a drug that are harmful for humans. Okay, so next is activity number 3. Here it is your task is to create a poster which explains the effects of one type of substance abuse, for example alcohol and tobacco. सो आपने इस एक्टिविटी के अंदर, इट्स योर होमवर्क, कि आपने इस एक्टिविटी के अंदर क्या मेंशन करना है। आपने टोबैको या अल्कोहल या इसके रिलेटेड एनी अदर ड्रग्स जो हमने ऊपर भी मेंशन किए, इनमें से किसी एक ड्रग के ऊपर आपने डिटेल ये लिखना है कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में आपने लिखना है उसके इफ़ेक्ट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम यूनिट 1. होप यू गाइज हैव लर्नड well in this lesson, and thank you for joining us. That's all for today. Your homework will be shared on the portal. Thank you for joining. Allah Hafiz.